Hello champions and the future mathematicians. Today I will explain you in my last minute revision topic how you can solve the calculus of variation problem in just a couple of seconds. Myself Dr. Harish. You can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the playlist of the CSIR UGC net. You can see I had uploaded the last minute revision concepts on the linear algebra. You can also see in this playlist last minute concept on the real analysis and many more lecture in this playlist. You can follow and subscribe my YouTube channel so that you can get the notifications when I upload the next video. Always remember student, whenever you will see any question which are related to the extremals, or you can define the functional from A to B of f, then you can solve the problem within the 15-second time periods if you are watching my these lectures and the previous lectures as well. But यहाँ इस lecture में I will tell you a very unique concepts such as the weak minima, strong minima, weak maxima, strong maxima, and so on. And in the last 3 examinations, a recent trend was set up by the examiner where they can ask the question related to the functionals based on the norms. You can see these are based on the norms. It's a December 2023, it's a March 2025, again based on the norm. How you can solve such kind of the questions? Some students has sent a comment in my last videos and they requested me that sir kindly make a small shortcut video for solving such kind of the questions. So based on that I will upload this today's video and I hope you can watch and learn the concept how you can solve the problems in the 15-second time period. एक बात याद रखो बच्चों, मेरा काम सिर्फ इतना नहीं है कि आपको 15 सेकंड का ट्रिक बता देना. My job is also to boost up your confidence so that once you can enter in the examination, you can remember my lectures and solve each problems in the 15-second time periods. I try my best to boost your confidence levels before the examinations as well as inside the examination. एक बात और याद रखो, अगर आपने ये सारी प्लेलिस्ट देख ली है, सब लेक्चर अच्छे से देख लिए हैं, देन यू विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन 101%. मेरी गारंटी है आप 101% आपका नेट और गेट क्वालिफाई हो जाएगा. 100 of the students already qualified that. You can ask them to all those students who have qualified them. You can put a comment all those students. I request you, जिन स्टूडेंट ने क्वालिफाई करा इन बेस लेक्चर पे, काइंडली कमेंट ऑन दी वीडियोस so that other can also remember that these videos are beneficial. चलिए स्टार्ट करते हैं. जब भी आपको फंक्शनल, whenever you are talking about the extremal, you start always with the Euler equations. Fine. But whenever the functional is more than the single derivatives like y dash, it also involves the y double dash, then this equation becomes, you can use either as a partial derivatives or you can use as a full derivative. There is no problem. Minus d over dx, partial derivative of f with respect to y dash, it's negative, then positive, second times derivative with respect to y double dash, and if it is a y triple dash then it's a negative cube x cube, partial derivative of f with respect to triple derivative, and so on, which is a 0. On the other hand, if you observe that the function f is independent of the x and y, then the always solution will be y is equal to ax plus b. सिर्फ ये दो कंसेप्ट के बेस पे पूरा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा आपके लिए. नाउ once we are talking about the concept of the weak minima, weak maxima and so on. Fine. देखिए सबसे पहले आपको ये solution निकालना होगा. Fine. Now once based on the values of the f, you can always calculate second derivative of the f with respect to y dash square. That means you can calculate the value of the f y dash double derivatives. Fine. Based on the nature, whether it's a greater than 0 or less than 0, we can define the concept of the minima and maxima. If you prove that it is greater than 0 for some value of the y only, then you can say it's a weak minima. And if you prove that this value is less than 0 for some value, for example, अगर मान लीजिए आपके पास इसकी वैल्यू 2y आ गई, फाइन, तो clearly say this number is greater than 0 whenever y is my greater than 0. इसका मतलब for some value के लिए है, complete के लिए नहीं है. Fine. So in that case you can call as a weak minima and the weak maxima. On the other hand, if this term is
greater than 0 or less than 0 for all the values, then we call as the strong minima or strong maxima. Also remember that whenever you prove that it's a strong, it always implies the weak, but converse is not true. If you prove that it's a weak, it is not implies that it is a strong maximum. चलिए स्टार्ट करते हैं. 15 सेकंड का टाइम पीरियड अपनी घड़ी में नोट कर लीजिए और उसके बाद सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वीक मैक्सिमा मिनिमा पूछा है. लेट्स स्टार्ट विद द y और f will be my y dash square plus x square. Fine. So can you calculate the second derivative with respect to y dash, which is greater than 2 or which is 2, which is always greater than 0 for all those values of the y. इसका मतलब that will be, if it is a greater than 0, then it is a minima, and if it is for all, then we call as the strong minima. Fine. So that means maxima condition cancel out, maxima condition cancel out. Now you can see the first option is a weak. So third option is the correct option. अब आप देखिए यहाँ weak के ऊपर कोई condition नहीं है. So every strong implies weak also. So that means it's a weak minima as well. A and C are my correct answer of the problem. चलिए next one देखते हैं. Then which are the supremum and infimum? Okay, fine. So your condition of the I will be 1 to 0 e raised to power minus u dash square of dt. देखिए कितना ब्यूटीफुल कंसेप्ट मैंने आपको पहले बता दिया. ये जो फंक्शन आपके पास है आपका f क्या है इस केस में, e raised to power minus u dash square. Clearly say which is independent of x and y. फाइन. तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, हमेशा ही ax plus b. अब यहाँ पे y की जगह पे u है, then your solution will be u in terms of the t is at plus b. यही तो मैंने कंसेप्ट बताया आपको, मैं वापिस आ रहा हूँ आपके लिए. You can see whenever the function is independent of x and y, the solution will be linear equations. So in this case, you can see the function is in terms of the u, independent variable is t. Now clearly say u of 0 is 0, u of 1 is 0. That implies a is 0, b is equal to 0. That means u of t is my 0. Fine. Now can you calculate the value of the I? So once u will be 0, if you substitute them 0 to 1, it's a e raised to power minus 0. If you integrate them, it is my 1. Is it okay? Now also we all know exponential part can never be negative. It is always be greater than or equal to 0. When you integrate them, it is also greater than 0. Therefore I is also greater than 0, and you have computed I is my 1. Is it okay? Now clearly say this one is my maximum. So m is equal to 1, satisfied. What is the infimum? Infimum is my 0. So yes, first option is the correct option. M is attained, yes, because we can obtain the value of the m is equal to 1 corresponding to the solution u is equal to 0. Is the value of the small m 0 attained? But we all know the value of this function can never be 0. So that means small m can never be attained. But infimum is my 0, fine, but m is equal to 0 can never be attained. Again, the right answer is A and C are the correct options. Next one, you have to find the infimum. Again, you can see the function is independent of x and y. So that means your solution will be a of t plus b. U of 0 is 0. This implies b is equal to 0. So my solution is a of t. I can substitute the value in the second constraints. So mod of a, mod of t is my 1 over the domain 0, 1. So इस domain में small t की value 1 है, तो इसका मतलब small a will be my 1. So that means small a will be my plus minus. तो आपका solution क्या बन गया? U will be my plus minus t. Fine. Then your target is to find the infimum. तो आप इस equation में fill कर दीजिए. What is the u dash? U dash is my plus minus 1. Fine. When you substitute here, it's a square. It is always plus 1. Answer is plus 1 is my correct answer of the problem. उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे. चलिए look at the next one. The given function is y dash square minus y square, weak minima, weak maxima, and so on.
Can you find the second derivative? 2 which is greater than 0 for all those values of the y. That means this implies the function is my strong minima. So पहले तो maxima वाला कोई केस है नहीं है. Every strong minima will implies the weak minima. Fine. Now the question arises is whether the alpha is less than pi or greater than pi. Fine. So the curve is passing through the 0, 0, y of 0 is 0 and y of alpha is my 0. तो पहले सोल्यूशन निकाल लेते हैं इसका. व्हाट कुड बी द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम? आई कैन स्टार्ट विद द Euler equations minus d over dx partial derivative of f with respect to y dash 0. So it is my minus of 2y, it is minus 2y, and again with respect to dash it's a y double dash. So that will give you y double dash plus y is equal to 0. Clear? So the solution will be y is equal to a cos x plus b sin x. Fine. And y of 0 is 0. This implies a will be 0. Fine. So that means the solution will be b of sin x. Is it okay? Now, moreover, this problem is also known as the Sturm-Liouville problem. Fine. The Sturm-Liouville problem has eigenvalue n pi over l. यही होता है आपके पास. फाइन. आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? आप एक बार स्टर्म लेवल प्रॉब्लम का लेक्चर सुनिए which is available at my this playlist. Just wait for the 1 minute, it is just scrolling. So you can see the lecture on this sturm problem. बाउंड्री वैली प्रॉब्लम आप सुनोगे तो आपको कंसेप्ट को क्विकली से समझ आ जाए. अब आप देखिए, 0 से पास करेगा, y ऑफ एल्फा से भी पास करेगा, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा होगा. फाइन. तो इसका मतलब इसका नेचर सेम रहेगा. इट विल बी इधर मैक्सिमा, और आप इसका y डैश निकालोगे तो y डबल डैश, और y डैश निकालोगे तो कितना आ जाएगा? b ऑफ कोस x, और y डबल डैश निकालोगे तो इट्स अ माइनस ऑफ b साइन x. ऐसे ही तो आएगा ना. तो इसका मतलब इसका नेचर सेम रहेगा. फाइन. तो जैसे ही अल्फा, अगर ये वैल्यू कौन सी होनी चाहिए साइन के लिए? ये पाई होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे पाई की बात हो रही है. इज इट ओके? नाउ अब आपको ये तो पता लग गया कि ये मिनिमा है, स्ट्रॉन्ग मिनिमा है आपके पास, बिकॉज सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास क्या आ रहा है? 2 विच इज ग्रेटर देन 0. अब आप देखें जैसे यहाँ पे रहेगा नेचर सेम रहेगी. फाइन. तो इसका मतलब, और इसके बाद क्या ग्राफ होगा? ऐसे चेंज हो जाएगा. फाइन. तो दैट मीन्स वेन एवर एल्फा इज लेस देन ऑफ द पाई, दैट विल गिव यू द स्ट्रॉन्ग मिनिमा. सो एल्फा इज लेस देन पाई, स्ट्रॉन्ग मिनिमा. सो दैट इज अ कैंसल. तो अगर ये स्ट्रॉन्ग मिनिमा नहीं है इसकी रेंज में तो वीक भी नहीं होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग मिनिमा इस अल्फा के लिए है तो वीक मिनिमा भी इस अल्फा के लिए हो जाएगा. सो दैट मीन्स ए एंड बी आर द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. इज इट ओके? नाउ look at the next one. The functional possesses strong maxima and minima. What is your f? 1 plus x y dash square. तो पहले सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. तो कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स, और x की डोमेन क्या है? 0 से 1, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल दोस वैल्यूज ऑफ द y. सभी y के लिए होगा. दैट मीन्स अगेन इट इज माई स्ट्रॉन्ग मिनिमा. सो वीक मिनिमा, that is a maxima, will be cancelled out. Every strong minima implies weak minima. So strong minima is fine, weak minima but not a strong minima is cancelled. Right option is B is the right answer of the problem. आप चाहो तो सोल्यूशन निकाल सकते हो आइलर इक्वेशन से, पर जरूरत ही नहीं है. पूछा नहीं ना आपसे कुछ भी, आपसे मैक्सिमा मिनिमा पूछा तो सिर्फ ये कंडीशन अप्लाई करिए. ओके, लुक एट दिस अगेन, ए स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा मिनिमा. सो आपका एफ क्या है? उम्मीद करता हूँ you can like and comment on the video. I hope you enjoy this session too. So can you find the second derivative of the f with respect to y dash? So it will be 2 greater than 0. So again you will get a strong minima. So firstly we will see whether it's a maxima, cancel, maxima, cancel. Now out of that these two options, which one is a correct? Which one satisfy the initial conditions? अगर ये आपका एक्सट्रीमल है तो इसका मतलब y of 0 4/3 सेटिस्फाइड, अगेन सेटिस्फाइड. ये जो आपका एक्सट्रीमल है ये इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं हो रहा. सो द राइट आंसर इज बी इज माय करेक्ट ऑप्शन. फाइन. अगर बिकॉज यहाँ मैक्सिमा मिनिमा जब भी आ जाए ना वीक मैक्सिमा, योर टारगेट इज टू फाइंड ओनली दिस. इसको मत देखिए आप.
अगर आप ये भी फाइंड करना चाहते हो देन नॉट योर चॉइस, यू कैन फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव माइनस f विद रिस्पेक्ट टू y डैश। फाइन, तो फिल करता हूँ इसको y के साथ करेंगे तो इट्स 8y प्लस 8ex माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ y डैश के साथ करेंगे तो 2y डैश इज माई 0। फाइन, और इसको सॉल्व करते हैं तो 2 विल बी कैंसल आउट, 4y 4e रेस्ट पावर x माइनस y डबल डैश इज 0, दैट इंप्लाइज y डबल डैश माइनस 4y which is equal to 4e raised to power x। हालांकि इसकी there is no need to solve like this way, fine, but if you want I can tell you। So can you find the solution? It's a m square minus 40, so my solution will be c1 e raised to power 2x c2 e raised to power minus of 2x। और इसके लिए क्या करोगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालोगे, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी 1 over d square minus 4 e raised to power x। So I can substitute 1, it's a minus 3, 4. So that will be, it is minus of 4 over 3 e raised to power x। Now clearly say जब आप ये कंडीशन अप्लाई करोगे तो इसका मतलब C1 एंड C2 आपका 0 आ जाएगा, लेकिन आपको जरूरत नहीं है बिकॉज e रेस्ट पावर आपका सोल्यूशन में भी नहीं है। तो e minus 1 over 3 e raised power x is not the part of the solution, the only part of the solution is minus 4 over 3। So the right answer is B is my correct answer। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगेन इज अ पार्ट ऑफ द वीक मैक्सिमा मिनिमा। योर f will be y dash square plus x cube, so again you can see it is my 2 which is greater than 0, again you will get the strong minima। Fine, so maxima will be cancelled, maxima will be cancelled। Is a strong minima for all y's? Yes, it is 2. It's a strong minima for all the extremals. Strong minima on some, but not for the all. That's wrong. So the right answer is B option is the correct answer of this problem। Fine. देखिए हर तरह का क्वेश्चन सिमिलर आ रहा है आपके लिए अभी तक। The function is a weak minima, maxima, and then so on। Why you are look like this? Okay, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं कि आप सॉल्व करके कमेंट करके बताइए आंसर क्या आ रहा है इसका क्विकली से। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। Stop it। Have you get the answer? No? So you can see what is your f। देखिए अब आप ट्रिक तो समझ गए हो, तो आपको ये f तो लिखना नहीं था कॉपी पे। फाइन, so what will be your second derivative? It is a 1, it is greater than 0 for all y, that means it's a strong मिनिमा। तो मैक्सिमा वाले ऑप्शन तो पहले कैंसिल कर दो। फाइन, तो इस स्ट्रॉन्ग मिनिमा, अगर स्ट्रॉन्ग मिनिमा है तो दोनों का एक्सट्रीमल सेम है, सो दैट मींस बोथ आर द करेक्ट ऑप्शंस। सो ए एंड बी आर द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आप चाहते हो कि सर ये वाला एक्सट्रीमल कैसे आया निकाल के दिखाइए मेरे को, मैं फिर से निकाल देता हूं, पर दैट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, बट फॉर यू एवरीथिंग फॉर यू, आपके लिए सब कुछ कुर्बान। तो क्या आप निकालिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, आइलर इक्वेशन से करते हैं। 2 माइनस पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो y डैश इज माई 0, तो क्या बन गया ये y डबल डैश इज माई 2। सेकेंड डेरिवेटिव अगर किसी चीज का कांस्टेंट है तो वो इक्वेशन कैसी होगी आपके पास, और इसका इंटीग्रेट कर दीजिए 2x प्लस ए और y फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं, सो दैट विल बी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। फाइन, अब y ऑफ 0 इज 0, इससे क्या मिलेगा आपको, b will be 0, y of 1 is 0, that will a will be my minus 1। so आपका सॉल्यूशन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। फाइन, तो आपका देखो a एंड b आर दी राइट ऑप्शन। इसकी कभी फोकस मत करिए। फाइन, ये आपका वही आएगा सॉल्यूशंस। अगर आपको समय बचाना है एग्जामिनेशन में, जस्ट ट्राई टू इंप्लीमेंट माई अप्रोच y डबल डैश ओनली। चलिए, द वीक मिनिमा is attained on which of the following curve? So many easy। पहले तो ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं। y of 1 satisfied, it is satisfied, they are not satisfied। y of 2 is equal to 4, ये भी नहीं satisfied, ये satisfied हो गया। अब ये ऑप्शन हो सकता है या फिर डी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, चलिए वीक मिनिमा करना है तो पहले चेक कर लेते हैं वीक मिनिमा आएगा भी कि नहीं आएगा। 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो इसका मतलब एक्स क्यूब तो कांस्टेंट ही है,
इट्स अ माइनस, इसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव कितना होगा, पहले तो -2 देन -3 हो जाएगा, देन इट्स अ +6 y डैश ऑफ -4 दैट मीन्स 6x³/y-4। तो क्लियरली से x की वैल्यू क्या है आपकी 1 से 2 विच इज अ पॉजिटिव, दिस इज अ पॉजिटिव विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ दी y के लिए है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा, पर देखिए ये सबके लिए तो नहीं होगा ना। अगर आपका y डैश किसी जगह पे जाके 0 हो गया तब तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा आपका। फाइन, सो इट इज दैट्स व्हाई दे आर टॉकिंग अबाउट द वीक मिनिमम। अब उसका सोल्यूशन निकालने की बारी आई है। फाइन, तो सोल्यूशन निकालते हैं। तो क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू y d/dx f। मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा बच्चों कि इसमें को इस वीडियो को 10 मिनट पे पूरा करना है। हर क्वेश्चन को डिटेल में बता रहा हूं जिससे आप, शॉर्टकट ट्रिक्स बता दिया मैंने आपको आंसर, बिकॉज यही आंसर होगा इसका मोस्टली, बिकॉज ये सोल्यूशन को सेटिस्फाइड हो रहा है। चलिए y के साथ करेंगे 0 d/dx y डैश, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय y डैश क्यूब इज 0। किसी का x के साथ डेरिवेटिव 0 है तो इसका मतलब ये चीज आपकी क्या होगी, कांस्टेंट। फाइन, तो मैं दोनों तरफ क्यूबिंग कर देता हूं, सो दैट विल बी x/y डैश, अनदर कांस्टेंट अल्फा ले लेता हूं। फाइन, सो आई कैन से y डैश इज इक्वल टू अल्फा x, और इसको अल्फा डैश ले लेते हैं, सो 1/अल्फा इज देयर। नाउ फिर से इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, सो y विल बी अल्फा x² by 2 प्लस ऑफ d। तो आप देखो y ऑफ 1 जैसे 1 करोगे, y ऑफ 1 इज 1, 1 इज इक्वल टू अल्फा/2 प्लस ऑफ d, y ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। फाइन, सो 4/2 प्लस ऑफ डी, दोनों को माइनस कर दो, -3, सो अल्फा/2 माइनस ऑफ 2 अल्फा, 4 - 1 -3/2 अल्फा, अल्फा विल बी माई 1। और जैसे ही अल्फा 1 आया आपके पास, डी की वैल्यू आपकी हाफ आ गई। देखिए कुछ गलती हुई है आपकी, नहीं ये गलत हो गया ना, डी इधर से 2 आ रहा है और इधर से हाफ आ रहा है, तो कैलकुलेशन एक बार क्विकली से चेक करते हैं। मिली, यस अल्फा इज 2, सॉरी ये अल्फा 2 आएगा ना। अगर जैसे अल्फा 2 होगा तो आपका डी 0 हो गया। देखिए जैसे डी 0 होगा अल्फा 2, तो y इक्वल टू x², डी इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। चलिए अगला चलते हैं। इससे जून 2023 सिचुएशन है, यहाँ वीक मैक्सिमा नहीं पूछा। फाइन, यहाँ मॉडुलस ऑफ y बोला है, तो पहले तो इस मॉडुलस को थोड़ा सा ब्रेक करके लिखते हैं। तो क्या होगा y डैश स्क्वायर, अगर ये y मोड पॉजिटिव होगा तो ये मेरा बन जाएगा y डैश प्लस xy, कब, वेन एवर y इज माई ग्रेटर देन 0, अदरवाइज प्लस हो जाएगा ये y डैश प्लस xy वेन एवर y इज लेस देन 0। यही तो होगा ना। सबसे पहले पहला केस को डिस्कस करते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सोल्यूशन बना लेते हैं। तो क्या था आपका आइलर इक्वेशन, माइनस d/dx ऑफ, यही था ना। इसमें देखिए वीक मैक्सिमा मिनिमा नहीं पूछा तो उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे हम। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो y डैश के साथ करें, y के साथ करा 2y y डैश प्लस x माइनस d/dx इज 2y डैश माइनस y स्क्वायर इज 0। फाइन, so that will be minus 2y y dash plus x minus 2y double dash minus minus plus 2y y dash is 0. So that means y double dash is my x/2. So can you find the value of the y? Integrate कर दिया एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो that will be x²/4 plus a। फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं, y will be x³/12 प्लस ax प्लस बी। ये तो बनेगा ना सोल्यूशन आपका। फाइन, अब आपको गिवन कंडीशन दे रखी है। अच्छा, अगर ये यहाँ नेगेटिव होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव, ये तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तब उस केस में ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तब इस केस में ये नेगेटिव हो जाएगा, ये तब भी सेम ही आएगा, तब भी ये कैंसिल हो जाएगा। फाइन, चलिए y ऑफ 0 इज 0, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 0, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स सो a विल बी माई -1/12। तो आपका सोल्यूशन क्या बन गया, x³ माइनस x/12। So since there is no arbitrary constant involved in the solution, that means you will get the unique solution. Fine, so there is no solution.
is the y is equal to 0 is the only solution. That's wrong, because we get the another solution as well. Y is equal to 0 is a unique solution, fine. Y is not identical to 0. Yes, it's a unique solution, not identical to 0. Infinitely many solutions, wrong, because you get the only two finite solution. Y is equal to 0 and y is equal to x cube minus x by 12. Shall you look at this another one? Y is a piecewise continuous differentiable functions. Okay, so इसको थोड़ा सा सही कर लें. Y dash square minus 1 whole square of dx. क्लियर. अब क्या पूछा आपको? इट अटेन्ड इट्स मिनिमम वैल्यू. चलिए 10 सेकंड देता हूं, फिर से आपको मैं काउंटडाउन शुरू करता हूं. सोचिए एक बार और कमेंट बताइए इस पे आंसर दे. स्टार्ट. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0. फाइन, ओवर. कैसे सोचोगे आप? इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे आप? फंक्शन को देखो ना. ऑलवेज लुक अबाउट द फंक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्केयर? ये स्केयर ही तो मेजर प्रॉब्लम है इसके अंदर. अगर ये स्केयर है देन दिस नंबर इज ऑलवेज माय पॉजिटिव नंबर. फाइन, सो दैट नंबर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. फाइन, यही होगा ना. सो दैट मीन्स द सॉल्यूशन मिनिमम वैल्यू विल बी माय 0. So firstly, when it will be the 0? When the slope will be my 1. तभी तो 0 आएगा ना, or plus minus 1. Fine. So look at the options. The slope is not plus minus 1. Slope is minus 1. Slope is 1. Right option. Slope is 2. That's wrong. Slope is plus 1. Slope is minus 1. That's the right option. So B and D are the right answer of the problem. So देखो कितना आसान है. 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा समय. चलिए एक और तरीका बताता हूं. अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आया या नहीं सोच पाए एग्जाम में, तो क्या सेकंड मेथड क्या है? फर्स्ट ऑप्शन की वैल्यू को लेके गिवन इक्वेशन में फिल कर देते हैं. फाइन. y इज इक्वल टू एक्स बाई टू यहां फिल करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1/4 माइनस 1 होल स्क्वायर. सो दैट इज अ 9/16 एंड 0 से 4 में इसको इंटीग्रेट करोगे 9/16. सो दैट गिव यू 9/4. सेकेंड पार्ट, j विल बी, नाउ यहाँ ब्रेक हो जाएगा इंटीग्रेशन. 0 से 1, 1 से 4. When you take from the 0 to 1, the y dash will be my minus 1. When you take minus 1, it's a 0. When you take plus 1, it's again a 0. So answer will be 0. Look at the C. Again, it break into the two parts from 0 to 2 and from 2 to 4. When you substitute, 2 square is 4, 4 minus 1 is 3, 3 square is 9, and it will be 0. So the answer is 18. And the last option is when you substitute, again it break from the 0 to 3 and from 3 to 4. And when you substitute 0 to 3, the slope will be 1. 1 minus 1 is 0. Minus 1 whole square minus 1, 0. Now out of all these four values, which one is the minimum? The second and the fourth options are my minimum. So the right answer is again B and D are the correct option of this problem. तो देखिए कितना आसान है. जस्ट यू हैव टू लुक अबाउट द टर्म्स एंड गेट द आंसर. चलिए look at this another one. And then they are not talking about the, okay, they are also talking about every extremal is a minimum. Again a maxima, minima is there. So firstly we can check about the y double dash. So this will be 0, this will be 0. It is my 2 which is greater than 0. So that implies it will give you the strong minima. तो पहले तो मैक्सिमा कैंसिल कर दो यार. कहाँ पे मैक्सिमा लिखा हुआ है? मैक्सिमा, नॉट ए मैक्सिमा. नॉट ए मैक्सिमा तो सेटिस्फाइड है ना. सो देयर इज एक्सट्रीमल. यस, देयर इज एक्सट्रीमल विच इज नॉट ए मिनिमम. क्रॉस एवरी एक्सट्रीमल इज अ मिनिमम. फाइन. ए एंड डी आर दी राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. फाइन. और अगर आपको इसी क्वेश्चन में इसका क्या कहते हैं सॉल्यूशन पूछ लिया जाए एक्सट्रीमल होगा क्या, तो वो भी हम फाइंड कर लेते हैं. हाउ यू कैन फाइंड दैट? How you can find? I can start with the partial derivative with respect to y. 2y dash minus 32y minus d over dx. Partial derivative with respect to y dash. 2y dash plus 2y is equal to 0. So let's start with this one. 2y dash minus 32y minus 2y double dash minus 2y dash is 0.
Fine, I can divide by 2 y double dash plus 16y is equal to 0. Clearly say this is my Sturm level problem. Fine, otherwise you can write the solution. अगर आपको Sturm level नहीं समझ में आई अभी तक, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप ये लेक्चर सुनिए Sturm level प्रॉब्लम का. आप अगर Sturm level सुनेंगे प्रॉब्लम तो आप इसका डायरेक्टली सोल्यूशन क्या लिख दोगे, y is equal to sin of 4x. फाइन, एनी हाउ मैं यहाँ भी निकाल के दे रहा हूँ आपको, sin of 4x. फाइन, अब y of 0 is 0, that implies a is equal to 0. Y of pi by 8 is 1, so 1 will be b into 1, so that will be 1. तो आपका सोल्यूशन क्या मिल गया, sin of 4x. फाइन, तो देखिए मैंने पहले बता दिया आपको, बाय यूजिंग द स्टर्म लेवल प्रॉब्लम, बाउंड्री वाली प्रॉब्लम को सुनेंगे तो आपको यू विल गेट द सेम आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. Okay, look at this one. Y is the stationary point subjective to some conditions. Which of the following statements are true? If you look about the options, they are not talking about what is the value of the Y. Solution तो नहीं पूछा. Even they are not talking about the maxima and the minima. Fine. But if you want to find the solutions, firstly you can write the value of the F, which is 1 minus x square y dash square, because some constant is also given, so I can write as a minus lambda of y square. Fine. एक बात याद रखो बच्चों, it's on your choice whether you want to use as a negative or as a positive. That's on your choice. Fine. Always remember lambda is always my unrestricted variable. Fine. It just like say Lagrange multiplier. Fine. So I always try to use the negative sign. Fine. And then you can start with the Euler equations and get the solutions. But if you look about the options, they are not talking about the what is the value of the y. Fine. So then there is no need to solve the problem like in this manner. Just look at the options. Y is always, the word is always is a very important, is an even order. Fine. You can choose any of the even order. Let's say y is equal to x square. Fine. This is the even order. Fine. Now check whether it satisfies the given condition. Yes, satisfied. It is also satisfied. Is it satisfied this condition? No, because this is x4. Answer of the x4 will be 2 over 5, which is not equal to 1. That means always even order is my answer. Clear? Look at the second, y is the odd. So you can choose any of the odd polynomial. Y is equal to x is my odd polynomial. Does it satisfy the given conditions? Again, not. Moreover, they are not satisfied my given requirement. Fine. So that means the third option is also cancelled. अगर यहाँ पे this word is not given, then it may be possible that y is equal to x is not satisfied. X square, x cube, x5 or any of the sin x will be satisfied. Fine. But it is a polynomial. Sin x is not satisfied. Now, look at the first one. Y is a unique. Whatever the function unique, it is either is a polynomial, it is either the odd degree or it is an even degree, but we always discard from the second and third. Y can never be polynomial of odd and even degree. So that means the D option is the right answer of the problem. Otherwise, you can, if you don't want to use the shortcut tricks, you can start with the Lagrange equations and get the solutions. Again, you will get the no solution. चलिए, for more details, आप अगर चाहते हो तो you can watch my part 1 and the part 2 calculus of variations at my YouTube channel under this playlist, CSIR UGC net playlist. Fine. Next question देखते हैं. It's a June 2023. It's a recent year paper. Now, if you look about the what is your f will be y dash square z dash square plus y dash z dash. Clearly say the given function is independent of x and y. अगर independent है, then what could be the solution? Solution is ax plus b. Fine. The solution corresponding to the z will be cx plus d. Now you can substitute the equation. Y of 0 is equal to 1. That implies b is equal to 1. Fine. Y of 1 is equal to 0. That means 0 is equal to a plus b. That implies a is equal to minus 1. So your solution will be y is equal to minus x plus 1. Similarly, z is equal to 0 is my minus 1. D will be my minus 1.
and z of 1 is equal to 2. That will be a, d is my minus 1. Sorry, c is my 3. So your solution will be z is 3x minus 1. Now that's over. Now you can calculate the value of the z plus 3y. So z plus 3y, this will be cancelled out. It is z plus 3y. It is a 2. Yes, first option correct. 3z plus y. When you 3z plus 5y is a 8x minus of 2, which is not equal to 2. What is the value of the y plus z? So clearly say y plus z is my 2x. Satisfied. Y minus x is not satisfied. A and C are the right answer of the problem. And definitely your reaction will be look like say this when you are when you was in the June 2023, and if you already watch my these two lectures, definitely आपका reaction यही होगा कि आप कमेंट करके kindly like and comment on the videos as well. चलिए, the extremal of the function is passing through. Again, they are not talking about the maxima, minima, and so on. What is your y? F, y square, y dash square. So let's start with the Euler equations. Partial derivative of f with respect to y minus d by dx, partial derivative with respect to y dash. So let's start with this one. It gives you that 2y y dash square minus d by dx of 2y square y dash. Fine. I can cancel the 2. It is twice. Fine. Now I can take derivative. ये 2 तो cancel ही हो गया आपका. So that will be 2y y dash square plus y square y double dash is 0. Fine. Now if you open them, it will be y square y double dash minus minus plus y dash square is 0. Fine. And clearly say this number will implies you y square y dash is my 0. That implies y square y dash square is my constant. I can take the square root on the both side, so that give you y into y dash is another constant I call as the alpha. Fine. So I can write this number is y dy over dx. Fine. Now if you integrate them, this will give you y square over 2 is alpha x plus beta. So ये किसकी equation है ये? This the equation is the constant? No. Is it a linear? No. Is a part of the ellipse? No. Is a part of the parabola. So C is my right answer of this problem. Fine. तो देखिए कितना आसान से मैं सॉल्व करा मैंने. इस नथिंग इज डिफिकल्ट. जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द वीडियोस. चलिए अब करते हैं मेजर क्वेश्चंस. लुक एट दैट. दे आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्म. Fine. They are talking about the norm. They are talking about the norms. They are talking about the norms. Fine. चलिए सबसे पहले C1 नॉर्म्स, सुप्रीमम नॉर्म. पहले मैं यहाँ आपको सुप नॉर्म के बारे में बता दे रहा हूँ. फाइन. सुप नॉर्म है आपके पास है लेट्स से y ओवर द इंफिनिटी, और C1 नॉर्म आपके पास है नॉर्म ऑफ y plus norm of y dash over the infinity, where this infinity is defined as maximum over the interval a comma b of y. और ये मैं यहाँ पे y. क्लियर? इतना समझ में आ गया? ओके. नाउ अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं. देखिए इट्स वेरी वेरी इजी. यू कैन बिलीव मी, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इन द 10 सेकेंड. नाउ लुक एट दैट. दिस इज माई कैपिटल एक्स. फाइन. और इसकी डोमेन भी कैपिटल एक्स है. कोई भी यू कैन चूज एनी ऑफ द वाई विच सेटिस्फाइड दिस कंडीशंस, लाइक x into x minus pi satisfied, or you can choose x into pi minus x satisfied, or you can choose sine of x satisfied, and so fine. This satisfied the given conditions. Is it okay? Choose anyone which you can make a comfortable. So I am comfortable with the sine x. Fine. So I can choose the function y is equal to sine x. Is it okay? Fine. चलिए बस आपका काम हो गया खत्म. नाउ
You can talk about the infimum, local minima, maxima, supnom and so on. सबसे पहले supnom की बात करते हैं. That give you norm of y infinity. Fine. लेकिन j ओके y of 0 भी पूछा है, पहले j of 0 निकाल लेते हैं. j of 0 कितना है? y is equal to 0, so that will give you 0. क्लियर? अब आप ध्यान दीजिए, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं इस तरह से, y minus 0 is fine. और अगर नॉर्म की बात है, so that number will be less than epsilon. फाइन. इसको मैं जस्ट वेट, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं. सो दैट नंबर इज लेस देन epsilon. फाइन. इसका क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स y विल कन्वर्जिस टू द 0. ये तो मतलब है ना इसका, y विल कन्वर्जिस टू द 0. बट अगर आप इस गिवन इक्वेशंस में देखो, दैट आर डिपेंडेंट ऑन द y डैश एज वेल. इज देयर, और इस सुप्रीमम में कहीं पे भी y डैश का कोई नाम नहीं लिखा हुआ. फाइन. लेकिन अगर आप देखोगे C1 नॉर्म में इट ऑल्सो इन्वॉल्व द y डैश, लेकिन सुप नॉर्म इज independent of the y dash. Fine. So what I can do, I can choose the value of the y dash is my any number, say alpha. That alpha can be greater than 0, it can be less than 0, or it may be 0. Is it okay? Now let's start with the j of y. तो क्या आपका 0 to pi y square 1 minus y dash is my alpha is 1 minus alpha square of dx. और y मेरा क्या था? sin x. अगेन ये 0 के अराउंड 0 पे ही जाएगा, तो आई कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू. 1 minus alpha square is common. What is the integration of sin square x from 0 to pi by using the orthogonal property? This number is my pi over 2. क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक? बस ठीक है. ये आप ओरली कर सकते हो, क्योंकि आप पहली बार करने जा रहे हो इसलिए आप ये सोच रहे हो आप. तो मैं एक बार यहाँ लिख रहा हूँ सोल्यूशन, क्या आपका 1 माइनस एल्फा स्क्वायर ऑफ पाई ओवर 2, और दूसरा क्या है, y ऑफ 0 आपने 0 निकाला है. अब चलते हैं पहले इन दो ऑप्शंस के ऊपर. y ऑफ 0 इज द लोकल मिनिमम. फाइन. लोकल मिनिमम का मतलब क्या है कि आपका j ऑफ 0 का आंसर ये होना चाहिए. फाइन. एंड y ऑफ 0 इज द लोकल मैक्सिमम, मतलब j ऑफ 0 मैक्सिमम होना चाहिए, तो इसकी तरफ ये होना चाहिए. फाइन. यही तो कहा है. अब आप ऑप्शन देख लेते हैं. अल्फा कैन बी एनी नंबर. अल्फा कैन बी ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, और इज इक्वल टू 0. लेट्स चूज अल्फा इज इक्वल टू 3. अल्फा पॉजिटिव ले लो, ग्रेटर देन 0 3 ले लिया, तो j ऑफ y क्या होगा आपका? इट्स माई नेगेटिव. फाइन. दैट नंबर इज माई लेस देन ऑफ j ऑफ 0, तो इसका मतलब ये आपका डी ऑप्शन कैंसिल हो गया. Fine. But if you choose alpha is my say 0.5, then what is the value of the j of y? J of y is my positive number and that is greater than of j of 0. So इसका मतलब आपका ये डी ऑप्शन कैंसिल हो गया, इससे फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया. सॉरी, j ऑफ इट्स अ ग्रेटर देन. फाइन. तो j ऑफ y अगर 0.5 ले रहे हो, एंड तो दिस ऑप्शन इज, बोथ ऑप्शंस आर कैंसिल. फाइन. फ्रॉम द j ऑफ y इज लेस देन 0, jy इज लेस देन 0 है, तो आपका ये फर्स्ट सी ऑप्शन कैंसिल हो गया फर्स्ट वाले एग्जांपल से. इफ यू टेक अल्फा इज 0.5 देन इट विल बी, और इफ यू टेक अल्फा इज इक्वल टू 0 देन j ऑफ y इज माई greater than j of 0, because j of 0 is, but you can see because supremum norm is independent of the y. ये कितना क्लियर हो गया? चलिए अब चलते हैं नॉर्म C1 नॉर्म पे. C1 नॉर्म आपका क्या कहता है? नॉर्म ऑफ y प्लस नॉर्म ऑफ y डैश is less than upside. Is it okay? So what does it mean? That means y is approaches towards the 0 and y dash is also approaches towards the 0. So that means y dash, अगर मैं अगेन y dash को अल्फा ले रहा हूं, तो आपका अल्फा कैसा होगा? अल्फा में भी 0.001 और अल्फा में भी माइनस 0.001 समथिंग लाइक. फाइन. बट इट कैन नेवर बी 3 बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस कंडीशन. तो आपका j ऑफ y कितना आया था अभी आपका? पाई ओवर 2 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, एंड j ऑफ 0 कितना आया था आपका? 0. नाउ क्लियरली से whenever alpha is near to the 0, this number is always a positive number, so that number is always be greater than of j of 0.
That means j of 0 is a local maximum. That means j of 0 is greater than j of y, but that's wrong. J of 0 is the local minimum. That means j of 0 is less than of j of y over the C1 norm. Yes, A is the right. Fine. अभी पहली एग्जांपल करवाइए ना. फाइन. अभी देखिए अगली 4-5 एग्जांपल इसी अप्रोच से सॉल्व करता हूं आपकी. चलिए. नाउ यू कैन सी सर दिसंबर 23. ये क्या आपका हो गया? दिस इज माई सुप नॉर्म एंड दिस इज माई C1 नॉर्म. फाइन. क्या ओके इसकी डोमेन एस है और आपका फंक्शनल भी आपका एस पे डिफाइंड है. इज इट ओके? क्या कोई फंक्शन ले सकते हो जो इसको सेटिस्फाई करता है? y इज इक्वल टू साइन एक्स. फाइन. और अगर मैं पहले b0 की बात करता हूँ, b0 एंड b0 on the value of the b0, that is here the value of the f is almost 0. Fine. और यहाँ पे y की बात हो रही है. That means the value of the y will be 0. What about the y dash? b0 is independent of the y dash, so that means alpha can be any number. So what is the value of the j of y? It is from 0 to pi 1 minus alpha square. Fine. And the value of the y is my sine of x, so sine square x. तो ये तो सेम ही बन गया क्वेश्चन पिछला ही. फाइन. क्लियर. तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं अल्फा की वैल्यू 3 ले रहा हूं तो इसका मतलब ये j ऑफ y आपका नेगेटिव हो जाएगा. दैट इज लेस देन ऑफ द 0 एंड j ऑफ 0 इज माई 0. फाइन. तो इसका मतलब b0 के ऊपर ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया. बट अगर मैं अल्फा की वैल्यू हाफ ले रहा हूं देन j ऑफ y इज माई पॉजिटिव विच इज ग्रेटर देन ऑफ j ऑफ 0. तो आपका फर्स्ट ऑप्शन भी कैंसिल हो गया. इज इट ओके? नाउ look at the second on the case of the b1. b1 is based on the y dash, f and f dash, so that means y is also approximately 0, y dash is also approximately 0. Fine. That means if you take alpha is my y dash, so that alpha is approximately 0. In that case this number is always positive, that is always greater than of j0 on the curve of b1. So b option is cancelled. D option is the right answer of the problem. Fine. लेकिन एक चीज मैंने आपको नहीं बताई. Whenever you can assume the solution, it makes sure the zero must be there. Make sure the zero must be there. अगर जीरो नहीं होगा तो then we can try to adjust the value of the y and then get the solution. वो भी मैं बताऊंगा आपको इसी क्वेश्चन में. क्लियर दोनों क्वेश्चन? चलिए अगला देखते हैं. अब आप यहाँ देखो ये जीरो नहीं है आपके पास. एक और क्वेश्चन था मेरे पास, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं. फाइन. ये यहाँ पे जीरो है. फाइन. फिर उसके बाद मैं इस क्वेश्चन पे जाता हूँ जहाँ पे जीरो नहीं है. चलिए क्या कोई सोल्यूशन ले सकते हो? पहले तो डोमेन चेक कर लेते हैं. डोमेन सेम होनी चाहिए आपकी. फाइन. कोई ऐसा सोल्यूशन ले सकते हो जिसपे y ऑफ 0 इज 0. कोई भी एक केस जिसपे y ऑफ 0 इज 0, y ऑफ 1 इज 0 हो. बताइए. यू कैन चूज x into 1 minus x, or you can choose x into x minus 1, or कोई और is a sine of pi x, कोई और. yes. fine. so again if you want you can choose as a sine of x. और भी तो है. अगर मैं यही चूज कर लूं y is equal to 0, ये तो इधर भी कर सकते थे ना चूज. यहाँ भी हो सकता था ये. फाइन. जीरो है आपके पास तो y of 0 is a 0 is also be there. Anyhow if you want to choose y is equal to sin x, again there is no issue. Fine. Choice on you. चलिए तो मैंने एक सोल्यूशन क्या ले लिया इसका, y is equal to 0 ले लेता हूँ, चाहे y is equal to sin x, जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए ना, जिससे भी हो जाएगी मेरी कैलकुलेशन. चलिए सबसे पहले ऑप्शंस पे देखते हैं. अगेन नॉर्म्स के ऊपर है. पहले b0 पे काम करते हैं. b0 इज again b0 is my independent of y dash and this implies y is approximately 0 because यहाँ देखिए ना, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना y minus 0. फाइन. तो मैं अगेन लेट कर लेता हूँ कि y डैश की वैल्यू अल्फा है एंड दैट अल्फा मे बी ग्रेटर देन 0, इज इक्वल टू 0 और लेस देन 0. तो मैं j ऑफ y निकालता हूँ पहले. व्हाट इज द j ऑफ y? इंटीग्रेशन इट्स अल्फा स्क्वायर माइनस 2x alpha 4 of dx. So can you solve them? It's alpha square, integration is my 1 alpha 4. I can choose alpha square is common, 1 minus alpha square.
और j of 0, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ द j of 0? तो अगर y आपका 0 है, then what is the value of the y dash is also 0. So 0 minus 0 is 0. So j of y is my 0. Is it okay? Now again, अगर मैं अल्फा की वैल्यू, आई कैन चूज अल्फा इज माई से 3, तो ये नंबर आपका नेगेटिव हो जाएगा, देन दिस नंबर विल बी माई नेगेटिव. सो देयरफॉर उस केस में आपका j ऑफ y क्या हो जाएगा, लेस देन ऑफ द 0. 0 मीन्स j ऑफ 0. तो B0 कर्व के ऊपर j ऑफ y लेस देन 0 फाइन, j ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 रॉन्ग. On the other hand, if I choose alpha is my half, then in that case this number is my positive. In that case j of y is my greater than j of 0. Then in that case the first option is cancelled. Is it okay? चलिए अब कर्व करते हैं, बात करते हैं B1 पे. What is the meaning of the B1? That means y is approximately 0 and y dash is also 0. So that means alpha is my approximately 0. If I choose y dash to be alpha, तो अभी मैंने इंटीग्रेट करा था ना इसे, कितना आंसर आया था, अल्फा स्क्वायर 1 माइनस दिस इज अल्फा स्क्वायर, find alpha square of 1 minus alpha square. Now you can see whenever y is approximately 0, it may be 0.001 or it may be minus 0.001. This number is always my positive. That means this number is always greater than of 0. Fine. So that means j of y, and it is also the it is always greater than 0. Fine. So y1 less than cancel. D option is the right answer of this problem. बच्चों ये शॉर्टकट ट्रिक्स कोई नहीं बताएगा आपको, जितना मर्जी पैसा किसी को भी दीजिए, ये शॉर्टकट ट्रिक्स कोई नहीं बताएगा. हाँ, अब मैंने अपलोड कर दिया वीडियो, अब कोई भी देखकर कोई भी बता देगा आपको एंड दे क्लेम दैट, बट दिस इज द शॉर्टकट ट्रिक्स आई डिजाइन ओनली फॉर यू. चलिए अगेन यहाँ देखिए, यहाँ 0 था राइट हैंड साइड पे. अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड 0 नहीं है. फाइन, make sure this is not the right hand side 0, so you can never make a solution directly. Fine. So then first of all, what is the f is y dash cube plus y dash square. तो इसका पहले solution बना लेते हैं. Again you can see this function is my independent of x and y. Fine. So the solution will be y is equal to ax plus b. अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स और वाई नहीं होता, मान लीजिए ये सोल्यूशन आपका इस तरह से होता, तो फिर आप क्या करते, आइलर इक्वेशन से इसको पहले सॉल्व करके y की वैल्यू निकालते हैं. फाइन, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y बाय यूजिंग द आइलर इक्वेशंस, बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू द शॉर्टकट ट्रिक्स. वंस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y. नाउ अप्लाई द कंडीशन, y of -1 is equal to -1. That implies, sorry, it is a +1. I checked right now, I just checked it, it is a +1. No, fine, it's a -1. So it will be -1 minus a plus b. I can apply the second condition, 3a plus b. Can you solve them? So b will be 1, a will be 2. So therefore your extremal will be 2x plus 1. Fine, ये solution मिल गया आपको. Fine. So the first option, that is the extremal, psi is my extremal. First option is the correct option. चलिए look at the second options. Now again the second options are working on the norms. Find B0, B1 and B2. सबसे पहले B0 की बात करते हैं. B0. What is the B0 is? That means y is approximately to the psi. Fine. Y is approximately to the psi. Is it okay? But what about the y dash? Y dash can be any number. Fine. So that alpha may be greater than 0, less than 0, or is equal to 0. Is it fine? Now, firstly we can talk about the y. So let's start with this j of y. J of y will be -1 to 1. Y dash is alpha. So alpha cube plus alpha square. Fine. So if you integrate them, it's a twice alpha square. I can take a common 1 plus alpha. And what is the value of the j of psi? And I can calculate the value of the j of psi also. So psi is my 2x plus y, 2x plus 1. So if I substitute here, psi dash is my 2. So it's a 8 plus 4, 12. Integrate is my 24.
Fine. Now on the curve B naught, j of y is always greater than 24, but alpha can be any number. If I choose alpha is my -1, this j of y will be 0 and it is less than 24, which is less than of j of psi. The second option is cancel. Is it okay? Now look at the second options on the curve B1. On the curve B1. Now, on the curve B1, that means y is approximately to the psi, y dash is also approximately to the psi dash. Is it okay? But अब मैं जो कह रहा था यहाँ पे जीरो नहीं है. Once it is not a zero, then your target is to make them as a zero. Whatever the solution we have obtained, the solution psi we have obtained this way, plus I can use any of the functions, say let's say beta, into g of x. Fine. Remember, beta is a very small number which are trying to approaches toward the zero. G of x, you can choose g of x in such a way that the given conditions is satisfied, g of -1 and g of +1 as the 0. Instead of the 3 and 1, instead of -1 and 3, you have to choose the g in such a way that this value will be 0 at this given point. तो क्या आप इनमें से कोई एक चूज कर सकते हो सोल्यूशन? कैसे सोल्यूशन होगा? x² -1 हो जाएगा g. फाइन. और भी कोई बना सकते हो आप? g will be your sin pi x. Fine. Or you can choose the mode of x -1. In all these cases, it will be 0. Fine. So the better one I can choose as the polynomial because मेरे को यहाँ fill करना है ना, so it is also the polynomial. So therefore, I can choose the g of x is x² -1. Fine. Now what is the meaning of the psi dash? Psi dash will be my 2. So that number will be near to the 2. That means it may be 1.99 or it may be 2.001. Now you can substitute this value in the given equation. So firstly find the value of the y dash is a 2 plus 2 beta x. Fine. So I can substitute the values. I can write on here. So j of y is 1 to -1. It is cube and square. And the value of I can write as a 2 is outside, 1 plus beta x. So I can take an is 2 square, sorry cube. Okay, पहले मैं लिख लेता हूँ. It's a y dash plus y dash square. Okay, y dash will be my twice of 1 plus beta x. Now you can substitute here. Fine. So it's my 8 1 plus beta x cube plus 1 to -1 is a 4 1 plus beta x square of dx. And we all know whenever the function is odd, the integration is 0. Whenever the function is even, it is my twice. So we can use the concept. It is my outside. First function 1, a cube. If you open them, it's a cube plus b cube plus 3ab plus 3. Fine. Now clearly say this function is my odd functions. When you integrate from -1 to 1, it's 0. This function is also 0. So the integration becomes 1 integration will be twice. This integration will be x cube over 3. So when you substitute 1 -1, it's a 2 twice of the beta square. Plus similarly for this square, 4 is my outside. It is 1 plus beta square x square plus 2 beta x. Again, you can see this is the odd function. This is a 0 and it is a twice. It is a cube by 3. So it will be twice beta square over 3. So you can see I can take it as a 2 common 8. 8 is outside. 2 plus 2 beta square plus 4. 4 to where 8 is outside. 1 plus beta square over 3. So that number will give you answer is 24 3 plus 16 times beta square plus 8 beta square over 3. Is it okay? Now you can see. Now you can see I also need the psi. That number is my 24
and whatever the value of the beta is near to the 0. Fine. So you can see whenever beta is near to the 0, this number is always a positive because of this number. So that number is always greater than 24. 24 is my j of psi. So therefore j of y is greater than of the j of psi. So third option is the correct option. Fourth option is the wrong. A and C are the right answer of this problem. Make sure students, अभी तक क्या करा हमने सब क्वेश्चन में, यहाँ पे राइट हैंड साइड जीरो थी, सो आई कैन डायरेक्टली सब्सटीट्यूट द y इन द गिवन इक्वेशंस. फाइन. बट यहाँ पे भी जीरो था, आई कैन डायरेक्टली सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y. It is also the zero, I can directly substitute. But in this case, it is not as a zero. So firstly, you have to make the equations in this manner. Fine. Because for this case, there is no need because it is independent of the y dash. Once it is independent of the y dash, whatever the value of the alpha, beta, gamma. But in the case of the B1, it is dependent on the y dash. So that's why I have to choose in such a way that this condition will be satisfied as a homogeneous and the value of the y is obtained in this way. Fine. चलिए अगला चलते हैं. Again it's December 2023. Again extremal and your targets to find these solutions. Y of 1 is my 2, y of 2 is equal to 8. Okay, so your f will be, if I open them, it's a y dash plus x cube y dash square. So let's start with the Euler equations. Partial derivative with respect to y0 minus partial derivative with respect to y dash. So y dash 1 plus 2x cube of y dash is 0. Once you take the derivative is at 0, that means this number is my constant. So I call as a c. That implies x cube y dash is c minus 1 over 2. I call this is my another constant, say called as the alpha. So therefore x cube dy over dx is my alpha. So can you find the value of the y? Y will be alpha x cube, alpha divided by x cube into dx. Fine. Now you can integrate them. It is a y. This integration will be minus alpha over 2x square plus constant. Fine. Or minus alpha over 2 is another constant. So I can write this is my a over x square plus beta. Is it okay? Now you can substitute the values. Y of 1 is 2. So twice a plus b. Y of 2 is equal to 8. That is a over 4 plus b. Now you can subtract them. It's a minus of 6. So it's a 3 over 4a. So a will be my minus 8. Once you get a is equal to minus 8, b will be your 10 from the first equations. So आपका final solution क्या बन गया? So solution will be a is equal to minus 8 over x square plus 10. Fine. Now you can substitute the value. This is my x and second is y. So 3, which is minus 8 over 2 plus 10, not satisfied. Second number is 22 over 3 minus 8 over 3 plus 10, satisfied. Third option 6 minus 8 over 2 plus 10, satisfied. Third option is not satisfied because when x is equal to root 3, it's at 22, but it is my 23. B and C are the right answer of this problem. Okay, look at this another one. The card again you can see it's a recent year papers. So your target is to find the cardinalities. Fine. You can write the firstly equation y plus constraints lambda of y. Is it okay? Now you can write the Lagrange equations. Fine. There is no आप जब examination में होंगे then there is no need to write this line. You can write directly the value minus lambda minus d over dx of 2 y dash is 0. So I can minus is cancel out. 2 y double dash is equal to minus lambda. Fine. Or you can say which is minus lambda over 2. Now second derivative is my constant. Second derivative is my constant. That means the equation will be, so you can integrate them, minus lambda over 2x plus a
and then y will be minus lambda x square over 4 plus ax plus b. Fine. Now y of 0 is equal to 1. What does it mean? Y of 0 is equal to 1. That means b is equal to 1. Y of 1 is equal to 6. Y of 1 plus a plus b. B is my 1. So that means a minus lambda over 2 is my 5. Is it okay? Now integration of the y is equal to 3. So if you integrate them, it's a cube minus lambda over 12 plus a over 2 plus b. B is my 1. 1 integration is 1. So that will be a over 2 minus lambda over 2 is my 2. फाइन नाउ अब आप ध्यान से सुनिए एक लाइन इन दोनों को जैसे ही आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द यूनिक आंसर ऑफ द ए यूनिक आंसर ऑफ द लैम्डा आंसर कुछ भी आए बिकॉज आपको आंसर नहीं पूछा फाइन सो इसका मतलब आपका फाइनल आंसर वाई क्या हो जाएगा ये भी एक आपको एक यूनिक आंसर मिल जाएगा सो दैट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ द एक्स प्लस बी बी इज माई 1 सो कितने अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं इसके अंदर कोई भी नहीं है because we know the value of this we know the value of this that means the solution is my unique so there is only one cardinality that's only the unique solution about that so the right answer of the problem is B is the right answer of the problem. Okay, look at this another one. What is your f? F is y dash square plus y dash cube. Clearly say the function is independent of x and y. So what is your solution? Ax plus b. Fine. Now there exists what is a C1? C1 means one time continuously differentiable function. C2 means two times continuously differentiable function. But we all know that this function is my linear, which is a one time differentiable, two times infinitely times differentiable. But he said there is extremal minus C2. There is not a two times differentiable, but this is a two time differentiable function as well. Minus C1, that's wrong. Every extremal is a continuously differentiable. Every extremal is a two times continuously differentiable. That's true. C and D are my right answer of this problem. Okay, look at this another one. It's again June 2023. F is my y square minus 4y dash plus 4y square. Then convex, concave and so on. चलिए आइलर इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं सो 2y minus 4y dash minus d by dx of with respect to y dash minus 4y plus 8y dash is equal to 0. So I can substitute 2y minus 4y minus minus plus 4y dash minus 8y double dash is 0. I can divide it by 2. So that will be 4y double dash minus y is equal to 0. That will is a simple differential equations, constant coefficients. That means m is my plus minus half. So your equation will be C1 e raised to power x over 2, C2 e raised to power minus x over 2. Y of 0 is 1. So that will C1 plus C2 is 1. Y dash of 0 is half. So if you take the derivative, it's a C1 over 2. If you take the derivative, it's a C2 over 2. That implies C1 minus C2 is equal to 1. So can you solve these two equations quickly? So this implies C1 will be 1, C2 will be 0. So finally your solution will be e raised to power x over 2. Fine. Now, अब convex कब होता है? For the convex, we need to prove y double dash is greater than 0. For the concave, we need to prove y double dash is less than 0. So can you find the y double dash? Into 1 over 2, y double dash is 1 over 4 and exponential part is always the positive. So yes, it's a convex. It's a B option is the cancel. Now you can calculate y of x1 plus x2. It is e of x1 plus x2 over 2 and I can write easily this function is product of. So that will be y of x1, y of x2. Third option is the correct. Now for the fourth options, y of x1, x2, I can write this function is x1, x2 over 2, which is not equal to
E of x1 over 2 plus E of x2 over 2. So right options are A and C are the correct options. Now again you can see it's recent year 2025. F is my y into y dash plus y double dash square. Now the concept is y double dash. So your Euler equation becomes minus d over dx f over y dash minus then plus second derivative of y double dash. Fine. अगर यहाँ पे y triple dash होगा then you can write as a negative third derivative of the d cube by dx cube and so on. So let's start with this one. This is my y dash minus d over dx y dash. It is a y plus 2 times derivative with respect to y double dash. Fine. So clearly say this and this will be cancelled and this implies y of fourth times derivative is 0. अगर किसी भी चीज का fourth time derivative 0 है that means the equation is my cubic. So that is ax cube bx square plus cx plus d. Fine. Now y of 0 is 0. D is equal to 0. Y dash of 0 is equal to 1. 3ax square plus 2bx plus c. Y dash of 0 is equal to 1. So that means c is equal to 1. Y of 1 is equal to 2. So that will be 2 is equal to a plus b. C is my 1. So that number is my 1. Fine. D is 0. Y dash of 1 is equal to 4. So that is my 3a plus 2b. C is my 1. So I can say this number is 3 is equal to 3a plus 2b. So clearly say once you can solve, you will get a is equal to 1, b is equal to 0. So therefore, what could be the solution? Your solution is y is equal to a is equal to 1, b is equal to 0, c is equal to 1, d is equal to 0. अब पूछा क्या है? बाकी तो बच्चों वाला काम रह गया. 1 over 8, 1 over 2. 8 is LCM, 5 over 8 is the right answer of the problem. चलिए अगला देखते हैं. फिर से 25 का है. F is my here. y0 and y1 are free variables. Okay, now the concept of the free variables. Y of 0 is my free. जब भी free का बात है, that means partial derivative of f with respect to y dash at the point of x is equal to जो इस point पे free है, this is my 0. Similarly, second क्या बोला है? Y of 1 is free variable, partial derivative of f with respect to y dash at the point x is equal to 1 is my 0. फाइन. तो पहले इसकी कंडीशन बना लेते हैं. इसको y dash को करिए, f को करिए y dash से डेरिवेटिव और बाद में x की वैल्यू 0 फिल करते हैं. तो ये कितना हो जाएगा? That will be 2y dash at the point 0 plus 25 of y of 0 is my 0 और इसको at x equal to 1 पे करेंगे तो y dash of 0 plus 25 y of 1 is equal to 0. Fine. Then infinitely many extremals and so on. Extremal. So that means your target is to find the value of y. तो Euler equation से start कर लेते हैं. Fine. So it will be 25 of y dash minus d over dx 2y dash plus 25 of y is equal to 0. So clearly say ये चीज और ये चीज कैंसिल हो जाएगी. That implies y double dash is my 0. Second derivative किसी का भी 0 हो then the equation becomes my linear. यही होगी ना आपकी. अब ये वैल्यू आपकी यहाँ पे फिल कर देते हैं. What is the value of the y dash? Y dash is my a. So the equation becomes 2a plus 25 y of 0 is my b. Second is 2 times y dash again a plus 25. What is the value of the y1? a plus b. फाइन. तो आप इसको ये वाली वैल्यू अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, once you can subtract them you will get a is equal to 0. Fine. Once you get a is equal to 0
then you will again get b is equal to 0. So solution will be y of x is my 0. That means you will get the unique extremal. Fine. So let me, so you will get y of x is 0 is my unique extremal. Now you can check the option. The first option said it's a infinitely many extremal. More than one extremal wrong, no extremal wrong. Unique extremal is the right answer. Fine. But make sure student, these are unique extremals. But if somebody will ask you how many solutions are there, the solutions are my infinite. Solution is x. You can see y of 0.1 is 0. Y of 0.2 is 0. And on the domain 0 to 1, every solution, that is y of x is a solution. So it's infinitely many solution, but extremal is my unique. D is the right answer of this problem. चलिए अगला देखते हैं 2024 का क्वेश्चन है आपके पास. ओके, फाइंड द मिनिमम. ओके, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं. फाइन. ओके, सो आपका एफ क्या है इसमें, हाफ वाई डैश स्क्वायर प्लस हाफ वाई स्क्वायर, और एक इंटीग्रेशन वाली टर्म भी है माइनस लैम्डा इंटू एक्स वाई. फाइन. चलिए अब उस पर करते हैं डेरिवेटिव के साथ. वाई माइनस लैम्डा एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ y डैश के साथ करेंगे तो यहाँ पे अकेला y डैश रह गया. सो दैट गिव यू y डबल डैश माइनस वाई फाइन विच इज इक्वल टू लैम्डा x. इज इट ओके? नाउ इस कांस्टेंट कोएफिशिएंट इक्वेशंस, सो इसके इक्वेशन क्या बन जाएगी, m स्क्वायर माइनस 1. सो सॉल्यूशन विल कम c1 e raised to power x, c2 e raised to power minus x. And for this case you can find the particular integral 1 over d square minus 1 of lambda x. So I can taken minus common. Fine. So then it's a 1 minus d square of minus 1. So I can expand up to the first degree only. 1 plus d square of lambda x. So that will be minus lambda x. Fine. अब आपको सॉल्यूशन को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. देखिए फर्स्ट में क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर, लेकिन आपको तो x चाहिए, एक्स स्क्वायर साइन एक्स. फाइन. तो यही सोल्यूशन बचा आपका. आप इन दोनों को कंपेयर करो तो आपका इसका मतलब c1 एंड c2 आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ y1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू माइनस 1, तो आपका लैम्डा 0 आएगा. बट देयर इज नो नीड टू सॉल्व देम बिकॉज सारे ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गए. हाँ, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा दिया होता, अगर यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिया होता है x प्लस अकेला x, फाइन, तो आपको सॉल्व करना पड़ता, फिर आपको y माइनस 1 भी फिल करते. मैं आपको करके दिखा देता हूँ अगर आप चाहते हो. फाइन, आई हैव नो हरी. y ऑफ माइनस 1 फिल करते हैं इस पे, तो 1 c1 ऑफ माइनस 1 c2 ऑफ प्लस 1 एंड इट्स अ प्लस लैम्डा. y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 पे फिल करते हैं, c1 ऑफ e c2 ऑफ e माइनस 1 एंड माइनस लैम्डा. इन दोनों को ऐड कर लेते हैं पहले. सो क्या बन गया, ट्वाइस c1 प्लस c2 कॉमन हो जाएगा ना इसमें से, सो e प्लस e इनवर्स. तो इसका मतलब c1 प्लस c2 कितना हो गया आपका, ट्वाइस ऑफ e प्लस e इनवर्स. क्लियर? ओके, अब आप ये भी तो एक कंडीशन है ना, x इंटू वाई विल बी 0. इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस 1 to 1 x इंटू c1 प्लस x इंटू c2 एंड माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर ऑफ dx इज माई 0. अब आप ये जैसे इसको सॉल्व करोगे तो आप इक्वेट द कोएफिशिएंट करोगे, लैम्डा की वैल्यू 0 आएगी आपके पास. फाइन. तो देन C इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. चलिए अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं. योर टारगेट इज टू फाइंड द मिनिमम. फाइंड योर f विल बी 1 plus y dash square of root. Clearly say this function is my independent of x and y. तो आपका सोल्यूशन क्या बन गया, सोल्यूशन विल बी, सॉरी a तो यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आई कैन यूज एज अल्फा x प्लस बीटा. फाइन. तो आपको मिनिमम निकालना, आई कॉल दिस नंबर इज माई i, so I can substitute in the i 0 to a 1 plus y dash is my alpha. So the answer is b minus a of 1 plus alpha. Fine.
तो इसका मतलब आपका टारगेट सिर्फ ए, बी और अल्फा निकालना है। तो क्लियर है? ओके, अल्फा क्या आपका, तो इससे पहले इक्वेशन बन जाएगी दोनों से। यहाँ से भी देख लेते हैं, वाई डैश क्या आपका अल्फा, और इसके पॉइंट्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स इज माई ए इज ए स्केयर। ओके, आप यहाँ ये दोनों वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। इट्स वाई अल्फा ए प्लस बीटा, और सेकेंड वैल्यू y इज माई b माइनस 5 एंड इस b ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो आप दोनों को सॉल्व करिए, तो दोनों को माइनस कर देते हैं, तो अल्फा निकल जाएगा मेरा, इट्स ए स्क्वायर माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाय a माइनस बी। ओके, यहाँ पे मेरे को b माइनस चाहिए ना, तो मैं इसको b माइनस की फॉर्म में लिख लेता हूँ। सो दैट विल बी b माइनस 5 माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? सो आपका, अब आपको इसकी मिनिमम निकालनी है, इसको फिल करते हैं, b माइनस ए तो कैंसिल हो जाएगा जब मैं इसमें फिल करूंगा। सो दैट इक्वेशन बिकम्स b माइनस ए होल स्क्वायर प्लस b माइनस 5 माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर। फाइन, नाउ योर टारगेट इज टू फाइंड द मिनिमम। तो कैसे निकालोगे मिनिमम आप इसका? you can find the minimum is a two variables, so I can take partial derivative with respect to a is 0, partial derivative with respect to b 0। ओके, अल्फा क्या आया था मेरा, b माइनस 5 माइनस ए स्क्र ओवर b माइनस ए। फिर करते हैं, a के साथ डेरिवेटिव करेंगे, और चाहे तो आप स्केयर का निकालिए मिनिमम, और आई स्केयर पे। फाइन, सो आई कैन टेक द डेरिवेटिव ऑफ द आई स्केयर। सो a के साथ करेंगे, सो माइनस ऑफ 2 b माइनस a minus 2a, so that is 2 into 2 4a, b minus 5 minus a square is 0, और with respect to b करेंगे इसको, so that will be twice b minus a and plus twice b minus 5 minus a square is 0। फाइन, इस वाली चीज को मैं उधर ले जा रहा हूँ राइट साइड पे, तो ये क्या बन जाएगी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। फाइन, ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा और ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। फाइन, अब आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करा तो आपका ए का आंसर कितना आ गया, -1 माइनस ए विल बी योर हाफ। इज इट ओके? ए हाफ हो गया। अब आप यहां से भी देखिए, b माइनस 5 माइनस ए स्क्र ओवर b माइनस ए, तो यहां से आपको अल्फा कितना मिल गया, अल्फा विल बी माई -1। फाइन, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, सो दैट विल बी -2/2, अल्फा इज माई -1। अब बचा क्या, अल्फा भी निकल गया, ए भी निकल गया, बी निकालना है, तो किसी एक इक्वेशन में फिल कर देते हैं। लेट्स से यहाँ पे फिल कर दो, सो ट्वाइस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो दैट विल बी b माइनस ए which is minus b minus minus plus 5, it's a minus minus plus b square, a square is 1/4, so that will be 2 of b is a 20, 1/4 plus 1/2, so 4 is LCM, 23/8, so b will be 23/8। Now finally I can substitute the value of, so b will be my 23/8, a will be my half, is a root 1 plus 1. Fine, so this is my 4/8, so that will be 19/8 root 2. 19/8 root 2 is the right answer of the problem. So you can see that students, it's a very simple। मैं फिर कह रहा हूँ बच्चों, बार बार आप इस प्लेलिस्ट को सुनिए, मेरी गारंटी है, गारंटी दे रहा हूँ आपको, कोई भी आपको फेल करने से नहीं रोक पाए, और सॉरी पास करने से नहीं रोक पाएगा। ऑलवेज क्वालिफाई, 1000 of the students already qualified and we will see that। I hope you can share this video with your friends, you can like and comment on this video as well। Best of luck students and thanks for the watching। Happy learning, future mathematicians।